আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। मैं हूं सिजाद। मैं हूं सनी। तो सनी भाई, आज जो वीडियो हमने देखना है ना, वो है जी बांग्लादेश मेगा प्लान टू बिल्ड द फ्यूचर। ओ तो जी कौन सा मेगा प्लान है बांग्लादेश का फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए, ये हम देखने वाले हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा, यकीनन अच्छा लगेगा भाईजान। बांग्लादेश की बात हो और आपको अच्छी ना लगे, ये कैसे हो सकता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। This is Bangladesh, one of the fastest growing countries in the entire world. It is a nation that is continuing to emerge as a global economic powerhouse as it registers robust economic growth. In 1990, it had a nominal GDP of only 31 billion US dollars, but by 2020, it had experienced tremendous growth after its GDP was estimated to be worth over $330 billion. But the country's most exciting stories lie in its future state and the infrastructure developments that would support its transition to becoming an economic powerhouse. Before we move on, don't forget to leave us a like and hit that subscribe button for more. Bangladesh is an economy that has grown tremendously in the past and will continue to do so in the future. Its nominal GDP is expected to reach $1 trillion by the 2030s, which makes the next decade Bangladesh's time to become one of Asia's leading economies. This decade will also be a time for society to become a fully digitalized, tech-savvy population. And all of these will be possible because of the infrastructure that is supporting the nation. The country of Bangladesh is well on its way to doing so. It has planned and constructed world-class infrastructure developments across the land. From mega projects of transportation systems to power-generating energy projects, fascinating financial and business districts are just among the many other master plans that would embark the country to be a stronger future. The most notable infrastructural schemes to know, however, are mostly in the transit systems. There are currently quite a number of railway projects the country is focusing on, and most of these are estimated to be worth upwards of billions of dollars. The largest agenda is yet to be seen, but is the so-called Dhaka-Chittagong Railway, an $11 billion, 227-kilometer high-speed rail line. If it would ever be completed in the future, it would be the country's most amazing mega project it has ever constructed, as making it requires a lot of money and expertise. The following expensive endeavors are the likes of the Dhaka subway, an $8 billion, 258-kilometer underground rail network that would connect the various places of the capital of Bangladesh. Dhaka MRT lines, which is also similar to the subways by having its own rail network system. And finally, a staggering $2.5 billion airport expansion to the Hazrat Shah Jalal International Airport. Furthermore, there will also be the construction of bridges and road links, such as the Padma Bridge and the Dhaka Elevated Expressway. Other than the transportation agendas, the next biggest endeavors taking shape are the energy projects, one of which is estimated to be worth billions of dollars as well. The Rupur nuclear power plant is the biggest amongst the two, as it has a construction budget of $12.6 billion. It will also be the country's first ever nuclear power plant. Nuclear power plants are, however, notorious for having dangerous incidents in the past. However, this one will be treated with special hands, as the building safety measures are helped by Russians. Entertainment will also be a key factor in helping the country's economy. This is through a future sports entertainment complex known as the Sheikh Hasina International Cricket Stadium, which will be one of the largest stadiums around the world. A deep seaport project known as the Matabari Deep Seaport will be its master plan to enter the sea trade stronger. This will be the country's first ever deep seaport and is expected to have an annual capacity of 1.1 million TEUs. Along with these mega projects, there will also be a mega township which is locally known as the Purbachal, and it will be Bangladesh's next central financial and business district. It is a township that has been allocated tens of billions of dollars to construct a society filled with innovation. The entire project will consist of several super tall skyscrapers, one of which reported to be a 142-floor, 734-meter building called the Legacy Tower.
These infrastructure plans will help position the economy of Bangladesh as a competitive economic nation in the future. As the country advances further, the structure of the country is slowly shifting away from a traditional type of living to a more modern and technology-driven society. These are very common for emerging countries like Bangladesh, where the former of having an agricultural-based economy slowly turns into a service and manufacturing-oriented economy. Moreover, public spending and investments are not the only ones driving the economy. Private corporations and institutions are also doing their part and are doing far more in investing than the public. As the nation slowly proceeds with these, connectedness and innovation will eventually bring prosperity to not only its people, but to the rest of the world. ओके गाइस, ये था वीडियो जो हमने देखा है। तो बांग्लादेश के वो प्रोजेक्ट जो बांग्लादेश का फ्यूचर जो है वो वाकया ही बिल्ड करने वाले हैं। ये मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो बांग्लादेश का फ्यूचर तब्दील कर देंगे। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई है कि जो 2030 तक बांग्लादेश का जो जीडीपी 90s में तकरीबन 35 मिलियन पर था और अभी वो 400 मिलियन को क्रॉस कर चुकी है। और पिछले आप ये देख लें कि 30 ईयर में बांग्लादेश ने कितनी तरक्की की है, कितनी प्रोग्रेस रही है बांग्लादेश की। और सनी भाई फ्यूचर में ये बता रहे हैं कि 2030 तक बांग्लादेश जीडीपी विल बी इन ट्रिलियन, तो ट्रिलियन में हो जाएगी। तो जिन्होंने इतनी मेहनत की हो कि 1990 या 91 से लेके उन्होंने 2022 तक यार इतनी मेहनत की, तब उनका मुल्क क्या था, अब उनका मुल्क क्या हो गया। और बंगाली भाई हैं जो अपने मुल्क की तरफ देखकर यार खुशी महसूस करते हैं, फख्र महसूस करते हैं कि यार डेफिनेटली मेहनत की है। यकीनन ये वीडियो देखकर भी उन लोगों को प्राउड फील हो रहा होगा अपने देश पर कि जिस तरीके के प्रोजेक्ट पोड़दा सेतु जो हो गया वो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है जो बांग्लादेश के 21 आई थिंक डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको आपस में जोड़ेगा और वो बांग्लादेश की ग्रोथ रेट में भी इजाफा करेगा। ये चीज़ भी है। फिर एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बन रही है ढाका में, मेट्रो रेल चिटागोंग ढाका, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो पूर्वांचल आइकॉनिक टावर जो है ना ये एक बहुत ही ज़बरदस्त है। और स्टेडियम, स्पोर्ट्स, हर चीज़ में बांग्लादेश जो है वो वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। और पावर प्लांट देख लें, जो रूपर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। कर्नाफुली टनल है, आई थिंक वो इसमें इन्होंने भूल गए हैं कर्नाफुली टनल का भी, वो भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है बांग्लादेश का। इसके अलावा भी बहुत सारे बांग्लादेश के प्रोजेक्ट्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो 2030 तक बांग्लादेश का जो इमेज है उसको बिल्कुल चेंज करके रख देंगे। तो गाइस आपने की मॉनिटर है, कमेंट कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम यही कहेंगे कि गुड लक बांग्लादेश। जिस तरीके से आपने पिछले कुछ डेकेड्स में तरक्की की है इसी रफ्तार से आगे इसको कंटिन्यू रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, रखिए बहुत सारा ख्याल। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, शुस्तो था कौन, भालो था कौन।